Hello students, today we will start with our new topic, Elixir of Life, water. We have studied about air, and you know that water is equally important for all of us for the survival. Without water we cannot live. We all know that we can live without food for few days, okay, but we can not live विदाउट वाटर इवन फॉर फ्यू आवर्स. कुछ घंटे रह लेंगे, है ना, लेकिन आफ्टर फ्यू आवर्स वी डू नॉट नीड, मतलब फूड एक बार ही नहीं मिलेगा तो थोड़ा हम रेजिस्ट कर जाएंगे. द स्टोर्ड फूड विल बी कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, बट वाटर इज needed after few hours. So water is very important for all of us. We all know that 2/3 of our body weight is of that of water. Whatever is your body weight, my body weight, if you will divide, means 2/3 of it is water. So this water is very important. Water regulates the minerals. Water is important plays a very important role in transportation, and then water regulates our body temperature. So this is all about us, but other than that, in nature the water which is available to all the organism is equally important. So this water which is present on earth's surface, we can say that 3/4 of the earth's surface is covered with water. 3/4 of the earth's surface is covered with water. 3/4 surface water से covered है, ठीक है. That means if we divide earth into 4 equal parts, 3 parts are water and 1 part is land. Enormous amount of water. But this water which is present all around, means on the earth's surface, still we say save water, save water. We will come to that point, that why that saying or why that quotation of save water is there. So of the total water present, see, whatever water is present on the earth's surface, 97% is present in seas and oceans. You can increase a little bit, थोड़ा सा और ज़्यादा, 97 पॉइंट कुछ, यहाँ पे 2.6 आएगा तो यहाँ पे 97.4 ले सकते हो. तो अप्रॉक्सीमेटली 3% वाटर इज फ्रेश वाटर विदाउट सॉल्ट्स. दिस वाटर कंटेन too much salts. We cannot consume this sea water, ocean water, but the water which is present in 3% that is available to us. ये available है हमें, है ना, हम इसको ले सकते हैं, but इसका भी 2% is present at poles, polar regions में present in the solid form, while 1% is present in lakes, ponds, rivers, etc. यहाँ पे present है. अब जो ये water which is present in lakes, ponds, rivers, that is the only water which is available to all of us, and that water is enough for a man's need. हमारे लिए वो enough है. But there are two causes. First of all, the misuse by all of us. Secondly, the uneven distribution of water on earth. Now how does this happen? Uneven है, कहीं ज़्यादा पानी है, कहीं बहुत कम है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, इतना पानी होता है, इतना पानी होता है, बट आप उस पानी से तबाही मच रही होती है. So we need to control, we need to take a very good care of this water which is available to us in the rainy season. ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरे साल सारा पानी मिलेगा, हमेशा lakes, ponds and rivers are flooded whether it rains or not. No, it does not happen. Water regulate because of the water cycle on the earth's surface. Now how does that happen? We will come to that point. So the water which is available to us is in the two forms, मतलब surface water and ground water. If we talk about surface water, these are the surface water. Ground water will be the next topic. Before that we will come to the water cycle. हम water cycle पे आएंगे, because this water cycle is again plays a very important role. See, whatever water is present on earth, it regulates. How does this happen? See, sun's heat evaporates the seas and ocean water, ठीक है. Due to sun's heat, this evaporates.
वार्म वाटर इवेपोरेट हो गया, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी होगी, दिस warm air will rises up and when it reaches to a height it will form clouds बन जाएंगे, ठीक है. When these clouds will be heavy enough, they will fall down in the form of rain or precipitation again on the earth surface, ठीक है. Now not only evaporation but the plants which are there, they are having leaves, we know. I am only making one part, and all the leaves are having stomata, and we all know that these stomata, other than breathing, that is exchange of gases in the plant, other than that function, they also transpire the excess water, that is known as transpiration. That means whatever excess water is present in plants, that is being given out by these pores in the form of by the process of transpiration, and again that water evaporates and forms the part of atmosphere, this air, and then again it rises up and forms clouds. So not only this evaporation from seas and oceans, but transpiration is also a major cause, you can say, or it plays an important role in evaporation. So these plants also evaporate water, the process of transpiration. अभी देखो दो तरीके से हो रहा है. अगर आपने एक फील्ड पर, एक मान लो कोई सी भी खेत है और उसमें आपने छोटे छोटे कोई सा भी प्लांट लगाया है, वीट प्लांट और मेज प्लांट, वॉटेवर, मेज प्लांट है, वीट प्लांट है, सभी की लीव्स होती हैं, ऑल लीव्स आर ट्रांसपायरिंग वाटर, एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो रहा है. तो देखो मतलब फील्ड्स भी, प्लांट्स भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. वाटर नहीं है, वो ज़मीन से पानी ले रही है, जितना उन्हें चाहिए उन्होंने लिया और बाकी एटमॉस्फेयर को दे दिया. हमारी तरह नहीं कि भाई जितना चाहिए पानी पीने को चाहिए हाफ ग्लास, बट भरते हैं पूरा ग्लास, एंड देन हाफ इज़ वेस्टेड, झूठा हो गया, ख़राब हो गया, फेंक दो. दिस शुड नॉट बी डन. वी शुड टेक ओनली दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ नीडेड बाय अस, and that is how we can save. Every drop of water is really really important. We have enough water on earth, बहुत सारा पानी है, but fresh water उतना नहीं है. fresh water only 1% है, कम नहीं है, but we need to manage it in a proper manner. So what will happen? यहाँ से evaporation हुआ, leaves से transpiration हुआ, सभी से water कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में, एयर में, and it forms the part of air. This air rises up and form clouds. Clouds, when they are heavy enough, they fall down in the form of rain or precipitation. Now this water which is available to us during rains, you must have seen in Kota भी कितनी rains हुई, near around Kota है ना, काफ़ी सारा पानी आया. Drainage system, if that would have been a proper drainage system, हमारे एरिया में अगर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता तो ये सारा पानी आराम से चला जाता, वाटर लॉक नहीं होता. फैल रहा है, गंदा पानी हो रहा है ना. वेस्टेज ऑफ वाटर इज देयर, एंड व्हाट वन शुड डू, देयर शुड बी गुड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन एवरी प्लेस. हर जगह होना चाहिए, सो दैट व्हेन इट रेन्स, the excess water or the rain water goes deep down under the ground and it can increase the water table level of that area. If there are no trees, no problem, we can get water from the ground. Other than see, transpiration तो करते ही हैं trees, बट जहाँ ट्रीज होंगे वहाँ रेनफॉल भी होगी. ये सबको पता है कि पेड़ बारिश लाते हैं, तो उन एरियाज़ में भी होगा. जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहाँ बारिश आती है, जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ कहाँ बारिश आती है. वी ऑल नो दिस. सो दिस वाटर, अगेन वाटर साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये वाटर, सी वाटर वी कैन नॉट यूज़, ओशन वाटर वी कैन नॉट यूज़ बिकॉज इट कंटेन लॉट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, बट when the water evaporates, only water evaporates, no salts are there, and this water form means evaporated water form clouds. Clouds अभी गिरेंगे तो फिर से आपके पास पानी आ जाएगा और fresh water आएगा. तो what means wherever there are rivers, they all will be flooded with water, and enough water is available in the rainy season for थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल भर हमें काम में ले लें, इतना पानी हमारे पास एक रेनी सीजन में आ जाता है.
लेकिन what we need to do is to manage this water properly. हमें इस वाटर को मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली, तब ये वाटर साइकिल हमारे लिए काम का है. बट स्टिल एयर करेंट्स आ गए, यहाँ पानी नहीं गिरा, कहीं और जाके गिरा. तो कैनल्स कैन बी मेड, हम नहर बना सकते हैं, है ना, रिवर्स से निकाल करके. व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिग कैनाल्स. यहाँ से आपने निकाल दी तो ये जो एक्सेस वाटर है ये फील्ड्स में भी चला जाएगा, वो फील्ड्स का इरिगेशन भी हो जाएगा. एट द सेम टाइम रिवर्स विल नॉट बी फ्लडेड. एंड दिस इज, सी देयर आर चैनल्स, सो वी कैन कंट्रोल इट व्हेन वाटर विल बी प्रोवाइडेड इन द कैनाल्स एंड व्हेन नॉट. तो जब इरिगेशन का टाइम होता है तब छोड़ दिया जाता है पानी, जब नहीं होता तब नहीं. बट उसके पहले आप भर के रख सकते हो, इनके ज़्यादा हो गया तो आगे भी इनको आप प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट the fields around these canals can be irrigated. So these are the things what we can do to get this water. ठीक है, हम इस वाटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है. अगेन जहाँ ड्राउट्स है वहाँ पे इनको ड्रॉ कर सकते हैं. फ्लड्स जहाँ पे आते हैं वहाँ चेक डैम्स बना सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, सो दैट वी कैन कंट्रोल दिस फ्लड मीन्स दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड वी कैन यूज इट इन फ्यूचर, isn't it? So वाटर की इम्पोर्टेंस तो है ही. एंड देयर मीन्स एवरी ईयर ऑन 22nd of March we celebrate 22nd of March every year is celebrated as World Water Day. Every year, हर साल वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है. एंड देन द डिकेड ऑफ 2005 to 2015 was declared as Water for Life by UNO. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इस डिकेड को किया था वाटर फॉर लाइफ. स्लोगन था जो कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं, सो दैट दे कैन वर्क on this slogan that water for life. Water is really important and we all should save water. Drinking water, pure water, fresh water is present in limited quantity and that is why it is high time to save this water. In next class we will be reading about water pollution and other resources of water, rainwater harvesting and availability of groundwater, how we can recharge and all this. So you can read till then about this, and if you have any queries you can ask. So till then, thank you.